Hi everyone, I'm Meghna Abhyankar and welcome to Paavan Podcast. As we see people around us, like our family, friends, or colleagues, we all struggle to find that one sense of happiness. We may have our different ways to figure that out. It's traveling or listening to music or something else. But still, as a generation, we still try to figure out like how we can get that one true sense of happiness, right? So Sankalp, I actually wanted to ask you, like, as an individual or even as a observer, do you even relate to this scenario, or what is your thought on it? Definitely, Meghna. So, I mean, there are lots of things which happen on a day to day basis for everyone. So, particularly for me, when I look for happiness or peace, I either go to listen to music, I talk to friends, I have random discussions with them, I might travel somewhere or go out to eat good food or have a good chai. So, yes, I think everyone has their own way of getting into that zone and away from the clutter that's happening around them, and which is extremely important for someone to maintain their peace and to be able to go along with the tough life that we are in these days. So yeah, definitely, Meghna. I think this happens a lot, and not just with others, specifically with me also. So, for example, if I go and travel somewhere over the weekend, उस time पे बहुत खुशी होती है that we've come to this particular place. I'm enjoying the sunset. I'm enjoying the beaches. But once you're back from there, there's a feeling of emptiness, and that is a void that we constantly look to keep filling, but that never gets filled. And it's not just about travel, it's even the smallest of things कि आज चलो मैंने काम खत्म कर लिया, and I get that surge of, say, happiness or a sense of completion. But then again, I know that I have to start something tomorrow, so that stress, anxiety starts creeping in again. So yeah, I think you're very right to say that everyone, whether they find some or the other escape, but that moment of bliss or happiness and for a long duration never comes to them. Right. Yeah, exactly. And obviously, the one thing which I want to ask, like, even though we have lot of resources, facilities, we have opportunities, we know people around us who can actually help us, and still, if you think the past generation was more happy than us, and we are still struggling with how to find that one true sense which will be stay longer with us and not just a part of distraction, I would say. Right, right. Yeah, I think from what I've seen, firstly, I think we'll have to, segregate the emotions of happiness, and especially when we compare across generations. Reason being, the parameters how we define happiness or the experiences that were there earlier versus what we have now are very, very different. So, for example, earlier a moment of happiness could very simply be कि अच्छा मेरा बच्चा फर्स्ट आ गया, वो स्कूल में चला गया, and I've bought this house and we'll all stay together, we'll go on a family vacation, versus the things that give us that thrill or something that we're seeking for comes from various things. Either we go out to party and we go to a super place that we've never been to and we've always wanted to go there, be it through travel, be it maybe trying a new dish. And so essentially these forms of deriving pleasures have changed from what we have today and what were earlier. And the important thing is that these have increased nowadays, राइट कि आज मेरे पास इतनी चीज़ें हैं वेर आई कैन गो एंड एक्सपीरियंस, एंड also the fact that I can see other people experience that, which causes the need for me to experience that happiness. So I think what has changed for us right now, and that's completely my opinion, is that we have a very long laundry list of the things that we want to do, rather than saying That happiness. exactly to be able to find that happiness. We believe that all these check boxes have to be ticked, rather than saying कि this is something that I wanted and I've achieved it, मैं उसमें खुश क्यों नहीं हूँ, है ना? But that does not end, and that has multiple reasons. So yeah, I think in short, there is Okay. this slight dissatisfaction that has been there with us. Yeah. So I guess it's more about like today our happiness is depend on how other people looking at us. Like, do they think we are happy, and that's how it managed. Ki, okay. Like if I'm going for some travel, and then तब तक मैं बहुत खुश हूँ जब तक मैं अपने लिए ट्रैवल कर रही हूँ, एंड द मोमेंट आई सी दैट 10 अदर पीपल आर डूइंग द सेम, एंड आई वाज लाइक ओके, मैं तो कुछ यूनिक वैसे भी नहीं कर रही हूँ, तो वो हैप्पीनेस वहाँ से चला जाता है, Right. लेकिन मैं फिर से उस लूप में अटक गई, उस लूप से बाहर ही नहीं आ रही हूँ. Correct. तो like, do you think that ki the most
biggest reason of unhappiness, especially for our generation, is that we compare a lot and compare on very not so rational parameters. I think that is one of the biggest reasons that, as you mentioned, we do not live for ourselves. We are living to please others. है ना कि अच्छा हाँ अगर उसको लग रहा है कि मैं खुश हूँ then that means I'm happy and that is what I'm pursuing, that rather than experiencing what I am doing right now or where I am at, I think about how can I make other people feel good about where I am, how can I make this photo look beautiful, rather than how can I make my experience beautiful right now. So I think that's a major cause. And what that's also done is, as you rightly said, that when you are traveling you see hundreds of other people who've been there. And a lot of the times what happens is कि suppose I've been to a place and I say कि यार यहाँ पे तो मुझे फोटो खिंचवानी है, ये तो सबसे पॉपुलर स्पॉट, एंड इफ आई डू नॉट हैव अ फोटो ऑफ दिस प्लेस इट डज नॉट मीन आई हैव ट्रैवल्ड देयर. सो आई थिंक द reason for which we do any of the activities, or the reason that we strive for particular experiences, is not because we actually want to do it. It's because we feel that other people would feel that That I'm happy. yes, I am happy, or I am in a state of comfort, or whatever that sense of achievement is. But yes, that's not for you to do. And I think that's the most important thing for us to understand, that आज मैं कुछ भी कर रहा हूँ, why am I doing it? What is the cause? And am I traveling because I want a break from office, or am I traveling because that place has been something that I've wished for a very long time, or I'm traveling because someone else recommended it, or I'm traveling because it's very popular these days. So I think it's very important to get to the core of why you do certain things, Yeah. to be able to understand why we are happy or not. And I guess that's why we are not able to be happy for a long term, because our reasons are very shallow. Like, we think that, okay, even though I don't like traveling, but I see 10 people are doing that, or Mhm. even I don't like reading book, and I see that reading book is ultimately will keep you in a rank of being intellectual. Suddenly I'll try to push myself and try to enjoy reading book. And that's why, even though if somebody is commenting, oh yeah, you're reading this book, this is very nice and everything, the amount of happiness it's very shallow there, because it's totally depend on the comments. And when the number of comments are less, when the number of people recognizing you for the same is less, ultimately your sense of happiness will be less, right? Totally. And I think you put a very strong point there, that if you put your source of pleasure into an object which is not in your control, so your happiness is never in your control. Yeah. Right? That suppose, for a very small example, that when you give a kid a toy, right? You give that toy to him, buy that for him, he keeps playing with it, and the day that toy breaks, it becomes a very strong sense of dissatisfaction, or even a strong sense of pain when you get separated from that object. And as you mentioned, that if you're looking for a long term happy state for yourself, you should never find happiness in objects which are not permanent, right? Okay. Yeah. अगर आपका सोर्स ही इम्पर्मानेंट है जो आपको हैप्पीनेस दे रहा है, हाउ कैन योर हैप्पीनेस बी परमानेंट? Okay. तो हम लोग हमेशा हैप्पीनेस, अगर हम लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस चाहते हैं, तो वी कैन नॉट लुक टूवर्ड्स ऑब्जेक्ट्स विच आर इन देमसेल्व्स शॉर्ट टर्म. क्योंकि अगर हम हैप्पीनेस एक इम्पर्मानेंट ऑब्जेक्ट से डिराइव कर रहे हैं, तो हमारी हैप्पीनेस कभी परमानेंट हो ही नहीं सकती, बिकॉज दैट वाज द सोर्स ऑफ आवर हैप्पीनेस. बट अगर ऐसे हम सोचेंगे तो आई गेस हमारे रीजन ऑफ हैप्पीनेस एक तो बहुत लेस हो जाएंगे, क्योंकि ऐसी बहुत कम चीज़ें इस दुनिया में जो परमानेंट होती है. दैट्स फर्स्ट थिंग. एंड द सेकेंड थिंग इज कि ऐसी कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ होगी भी क्या कि जो कभी परमानेंट है और जो इजीली भी मिल जाए हमें. या तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी हैप्पीनेस तुम किन ऑब्जेक्ट्स में प्लेस करते हो जिनसे तुम डिराइव करती हो? एंड व्हाट डू यू थिंक विच ऑफ दोज आर परमानेंट, इफ नॉट परमानेंट, मे बी लास्टिंग फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन? मे बी जैसे मान लीजिए कि मैं
और मेरे जैसे जितने भी लोग हैं, अगर वो अपने लाइफ के 9-10 आवर्स उनके काम में लगाते हैं, तो अगर काम एक ऐसी चीज़ है जो मैं अपने पसंद का करना स्टार्ट कर रही हूँ, तो वो एक ड्यूरेशन मेरे लिए सेफ हो जाएगी कि जहाँ पे मैं हैप्पी हूँ, और एटलीस्ट द लाइक इवन इफ आई एम स्ट्रगलिंग, आई विल नॉट स्ट्रगल विद द थॉट ऑफ कि यार ये काम मुझ पे पड़ गया है. आई ऑलवेज स्ट्रगल विद द थॉट ऑफ कि दिस इज समथिंग आई वांटेड टू डू इट, आई एम डूइंग इट, एंड इवन इन अ स्ट्रगल आई एम हैप्पी. तो इस टाइप की चीज़ें आई गेस आई कैन फिगर आउट फॉर माई सेल्फ, और दैट्स वॉट आई डू. बट still, after that work, when I'm going to home, I'm thinking like how, who I am right now, what I'm doing. Am I even creating some impact on society? Am I doing something different? Or still I'm in this loop कि जहाँ पे मेरे जैसे 10,000 लोग काम कर रहे हैं and nobody knows their um, existence in a way. And that acknowledgement की जो कमी है, वो it become reason of my unhappiness. इंटरेस्टिंग। तो इसमें बेसिकली दो टाइप की चीज़ें हैं। तो जो हम इससे पहले बात कर रहे थे, दैट वाज एसेंशियली deriving pleasure in the things that we experience, things that we do, and the other is जो उसका opposite emotion है of say a dissatisfaction or not knowing why you're doing something, that arises again from multiple reasons, as you said, that maybe you're working on something and you don't know how impactful that is, or maybe something that you're doing is not unique at all, and everyone is doing that, so what's different about me? So I think these questions, is what makes us unique as humans, that we have this capability of thinking and questioning कि यार हम ये चीज़ कर क्यों रहे हैं, and that is what we were discussing earlier कि भाई वो जो why है, that needs to be very important in terms of why we're doing what we're doing, what is the outcome of it. Yeah. Hmm. But like, do you think that ki even thinking in this line ki that okay, when I'm doing work for myself in my area, in my circle, in my people, it's good. People know that I'm working everything. But when I see this on a larger perspective, when larger number of people, that my work is not even mentionable, and because of this being uh, unhappy or not being satisfied in what you do you think even ki this is the right uh, idea or right mindset to go ahead with it, if I can put this? देखो पर्सनली मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार होता था, बट देन ओवर टाइम आई फिगर्ड आउट दैट फर्स्टली there are infinite things in the world that you can do, infinite achievements that you can run after, because so just because you know I come from a physics background and cosmology, उसमें तो the first thing that is taught to us is that जो हम सामने अपनी चीज़ें देखते हैं, which we call the visible universe, and not just here, the entire cosmos that we're able to blaze through is just 4% of everything, right? Okay. And 4% is that universe. And what I personally feel is that it's much, much, much smaller. ठीक है, तो forget about what's around us, but जब तुम इतने इस cosmological scale पे चीज़ों को देखते हो, you realize कि it is practically impossible for a single person to be able to do everything, right? And I feel that this thought has made a huge impact in my life, because it's changed the way that I look at the world. Because again, there are contradicting emotions. I'll come to that in a bit. But firstly, we have to choose our battles wisely. Firstly, we have to be sure of what we're trying to achieve and where we're trying to achieve. And then the second view that comes in is essentially कि ठीक है, हमने अपनी बैटल्स चूज कर ली, तो व्हाट इज दैट एक्सटेंट टू विच वील गो देयर, है ना? इट डज नॉट मीन कि आई एम केपेबल ऑफ डूइंग 3 other things एंड आई हैव द टाइम टू डू इट, बट मैं वो करूँ ही नहीं। मैं बोलूँ कि नहीं यार, मैं तो एक जॉब कर रहा हूँ, मैं अपने फैमिली को टाइम नहीं दूंगा क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, बट आई एक्चुअली हैव द टाइम, I have the ability, I have the physical strength, stamina, whatever that is needed to do, but मैं फिर भी नहीं कर पा रहा हूँ। देखो, I think it is firstly fair to feel this way, because
you live in a society, you have people around you, people compare yourselves to everyone, and you cannot escape that. Okay? So firstly, that emotion is very very natural and will come to everyone irrespective. It is about how we handle that emotion and how we understand what we're doing actually. So suppose you are doing a regular 9 to 5 job, and you take out time by planning your holidays, arranging your work days and weekends, and you go and travel to a particular destination, and you see someone else who's been there, who's spending a lot more than you, staying in lavish hotels and spending 2 3 weeks there. So firstly, I think it is very very wrong to directly compare yourselves with them. Why? Because first you have to understand that there is only one dimension that we are comparing इस सिचुएशन में, दैट उस इंसान ने ये चीज़ें कर ली इन दैट पर्टिकुलर टाइम एंड मैंने नहीं किया. ठीक है? You've left out all other aspects of their life, कि वो क्या जॉब करता है, उसकी फैमिली सेटअप क्या है, वो कितना अर्न कर रहा है, वो कितना खुश है, वो किस जगह पे रह रहा है, वो लाइफ के किस स्टेज पे है, क्या वो छुट्टी में है, क्या वो काम कर रहा है, नहीं कर. यू डोंट नो एनी ऑफ दैट. यू जस्ट लुकिंग एट दैट पर्टिकुलर वन सिंगल फोटो एंड यू जस्ट immediately comparing yourself with them. So I think that reason of unhappiness which triggers in you can be converted into a very positive emotion by saying कि ठीक है यार, उसने इतना ट्रैवल कर लिया, बट देखो मेरे घर पे कितने सारे फ्रेंड्स हैं, मैं अपनी फैमिली के साथ कितना अच्छा टाइम स्पेंड कर रही हूँ. और जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ विच you know you have, and you're extremely thankful for it. I think this is what a lot of people miss, the appreciation of what we already have. And instead we just go to the things that we see कि नहीं उसके पास है, मेरे पास क्यों नहीं है. And that takes us to the previous point कि you cannot get everything. You have to prioritize what you achieve in life, you want to go towards, and why you want to do that. That's very important. And in your example, not your, but for everyone, yes, that when you went there to travel, was it to be that person in a competition of likes on Instagram, or was a brand behind you too, guys, saying that जिसके ज़्यादा likes आएंगे मैं उसको sponsorship दूंगा? No, right? You went there to relax your mind, to get away from the clutter of work, or just getting into a different environment to let your creative juices flow. And वहाँ पे जाके तुम वो ऑब्जेक्टिव तो भूल गई and you picked up another objective of comparing yourself or competing with someone else who does not even require competition with you. जैसे बहुत बार ये कहा जाता है कि आप अपने अंदर की यूनिकनेस को देखो, आप लोगों से कैसे डिफरेंट हो, उसे फिगर आउट करो. बट माय क्वेश्चन इज अगेन कि हाउ, फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड इवन दो आई फिगर दैट आउट, will help me to stand out in a people who are among around me. I think firstly it is a very very difficult thing to do, that you block your emotions, you block those comparisons, क्योंकि तुम वही है, हर जगह से सराउंडेड हो. एवरीथिंग दैट यू डू, फॉर एग्जांपल अब मेरे आसपास के लोग हैं, a lot of them are getting married, a lot of them are getting promotions, a lot of them are having kids, a lot of them are traveling, a lot of them are becoming millionaires. तो अब मैं सबसे तो नहीं चले जाऊंगा, मैं हर किसी से जो बात करूंगा, एवरीवन विल ट्राई टू पोर्ट्रे समथिंग और द अदर. सम विल फील कि यार मेरे पास ही है, कोई बोलेगा उसके पास वो है. तो it is not easy to do at all. First, let me put that out. And in order to be able to build that, I think a very important emotion is that you have to become stable in your thought. ठीक है? What that means is कि जैसे तुम किसी चीज़ को देखते हो, कोई बात सुनते हो, the immediate reaction that comes out should not be यार ये मेरे पास क्यों नहीं है ना? That is a response to a situation around you. And if you change the questions that you ask yourself while having conversations, or when just observing situations, you will be able to get to that step much faster. So the first thing, and this is something that has worked for me, is to not say कि मेरे पास ये नहीं है. ठीक है? That builds that layer of satisfaction in you कि भाई हाँ ठीक है, let me think about it and then I'll question this कि is this right or not for me, है ना? And again, this is a practice that needs a lot, this is a thing that needs a lot of practice to develop.
उसके बाद ये है कि यूनिकनेस अगर हम ढूंढ रहे हैं तो देयर विल बी थिंग्स विच विल नॉट बी यूनिक. टेक दोज थॉट प्रोसेसेस, so there will be a lot of things that will be common, and you need to be able to define that. Is the definition of success for you just being unique, और डू यू फील कि उस यूनिकनेस का आउटपुट क्या है या उसका इम्पैक्ट क्या है, या वाई डू यू वांट टू बी यूनिक? डू यू वांट टू बी यूनिक टू बी एबल टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम इन लाइफ जो कि और कोई नहीं कर रहा है, एंड आई फील कि आई कैन डू इट वेरी वेल, एंड दैट इज व्हाई आई वांट टू स्टैंड आउट फ्रॉम दैट क्राउड. So I guess the whole point of figuring out how you are unique, and I guess it's कि आप उस रैट रेस से या आप उस कंपटीशन से पहले तो खुद को अलग करो, और उसके वजह से जो आपको दिक्कतें आती है, आपकी मेंटल पीस में बहुत बाधाएं आती है, वो दूर हो. कि मैं अपना यूनिकनेस ढूंढूं कि चलो मैं इनके जैसे 4 चीज़ें नहीं कर सकती, बट ये एक चीज़ है जो मैं बहुत अच्छे से कर सकती हूँ. दिस माई यूनिक. इट कैन बी एनीथिंग. आई कैन बी गुड कम्युनिकेटर. मुझे मेरे पास अच्छे मैटरनल फीलिंग्स हो सकते हैं, या फिर मैं लोगों से उनका बहुत अच्छे से उनके मैं प्रॉब्लम सुन सकती हूँ. दैट एक कोई भी चीज़. तो इसीलिए वो होल की बता दे कि चलो यूनिकनेस तुम अपने अंदर का फिगर आउट करो. बट मेरा क्वेश्चन वही है कि चलो एक बारी मैंने ये फिगर आउट भी कर लिया, तब भी क्या मुझे उस कंपटीशन में स्टैंड आउट में हो पाऊंगी? लाइक, और इफ नॉट देन व्हाट आर दैट पैरामीटर्स कि जिसके थ्रू मैं ऐसा यूनिकनेस ढूंढ पाऊँ कि जो मुझे स्टैंड आउट करे. वैसे तो लाइक 3 हाथ होना ये भी एक यूनिकनेस हो सकता है, बट अनलेस एंड अनटिल वो कहीं यूज नहीं हो रहा है, उस यूनिकनेस का कोई फायदा नहीं है ना. तो क्या ऐसे पैरामीटर्स हम डिस्कस कर सकते हैं कि जिसके वजह से उस कंपटीशन से अलग होके हम कुछ डिफरेंट कर पाए? आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिफाइन करना कि बीट यूनिकनेस, बीट सक्सेस, बीट सेटिस्फैक्शन, उन सबका तुम्हारे पास एक क्लियर मेट्रिक होना चाहिए, है ना, कि तुम कैसे उस चीज़ के टुवर्ड्स वर्क भी करो, या फिर मुझे किस चीज़ की तरफ मूव करना है मुझे वही नहीं पता होगा तो आई विल नॉट मूव देयर. तो इसके लिए आई थिंक वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू से कि तुम कितने सेटिस्फाइड हो उस चीज़ से, right? And satisfaction can be different for different people, but at the same time satisfaction does not mean not being ambitious, okay? And this is a whole different debate that we can get to, but the first thing is ki whatever you're doing, you know, after the completion of it, why you started this task. No process is a single day process or a 1 hour process. Everything takes time, and everything takes time to firstly learn, then to practice, and then to perfect it. तो हमें ये बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए कि हैव वी मूव्ड फॉरवर्ड एंड ऑन दैट पाथ टू द progress, or rather a comparison with yourself of your previous state is what is very important in this particular journey. कि तुम अपने आप को देखो, एंड आई थिंक दिस इज समथिंग दैट हैज़ बिन ओवर सेड, आई मीन अक्रॉस टाइम्स, कि हमेशा कंपटीशन अपने आप से करो, दूसरे से मत करो. But the important thing is to be able to absorb that concept. Ki, why is it being said? And how does that translate into the day-to-day activities that you do? Because you cannot always have the resources that everyone else has. The starting points can be very, very different and are always very different. So you have to see that if you've decided a particular time frame for yourself, are you moving in that direction? Are you on the right path? And no path is straight. ठीक है, तुम कोई भी हाईवे पे जा रहे हो, there is no highway which will run just like this. You always have turns, you have tolls, you'll have a landslide somewhere, you'll have to take U-turns and get to another road. And this is true for life in general, and life is much, much more complex than a highway. Right? So yeah, I think that's the important thing, कि जो तुम्हारी डायरेक्शन तुमने सेट की है, are you going there or not? Very simply, forget about who are the other people who've done that, who've not done it, because everyone lives for a very different amount of time. Everyone lives in very different spaces, geographies, situations, family setups. So forget about that. Just make sure you know what you want to do, and are you able to do that, and is that bringing you happiness, or is that increasing your level of motivation to try that again? So like, if we to conclude, I would say ki if we are figuring out that one thing which will give us satisfaction, and we are ready to put ourselves into this endless process to progress on every step, that will become unique thing for us automatically. Exactly. The love for the path
So Gita puts it very well, right? The Bhagavad Gita says karmanyavadikaraste ma phaleshu kadachine. It is about being attached to the path and being detached from the results. Whatever be the result, just accept it, but be true to the effort that you're putting in. अगर वहाँ पे तुम मिस आउट कर जाओगे तो रिजल्ट तो कहीं और ही जाएगा. आइडेंटिफाई व्हाट योर गोल इज, आइडेंटिफाई हाउ यू वांट टू अचीव इट एंड जस्ट बी ट्रू टू योरसेल्फ. Like rather running behind what is unique, run behind something that you love, and ultimately that will be a unique thing for you. तो इसमें लेकिन एक और चीज़ है कि एक तो है कि यू फाउंड आउट व्हाट यू वांट टू परस्यू एंड यू लाइक दैट पाथ एंड यू कीप कंटिन्यूइंग ऑन इट. बट कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि सपोज यू हैव टू make your ends meet, you have to earn, but you're not getting that opportunity to be able to do something that you love completely. वहाँ के लिए फिर जो अप्रोच है वो थोड़ी डिफरेंट हो जाती है. And it can happen not just in work but even in your families, right? That you have certain duties कि यार नहीं, मुझे इसको पिक करने जाना है, मेरे को इसके साथ ये करना है, आज कोई बीमार हो गया तो आई एम रिस्पॉन्सिबल, आई हैव टू लीव अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड गेट टू दैट. तो this attitude will come into all aspects of your life to say कि when there are things that you don't enjoy, what is the mindset that you have to keep, and within that staying content and satisfied and not feeling frustrated. I think that is a very important skill that everyone needs to have, and especially us at these times, because we keep running away from responsibilities. आज हमारी जनरेशन ऐसे हो गई है जो कि हम पेरेंट्स के साथ नहीं रहना चाहते. वी फाइंड वेज टू मूव आउट, मूव टू डिफरेंट सिटीज़, बिकॉज जो जनरेशन गैप है दैट हैज़ इंक्रीज्ड वाइडली. The way our parents think versus how we think has become so huge, the difference has increased so much that it's very difficult to coexist. है ना? We also have to figure this out कि when these situations come, and it can come for a period of a number of years, not just a few days. So how do you deal with that? And in that scenario, we have to understand what our duty is. That when you stay in a societal construct, you are not always independent. There are people who rely on you, and there are people who you rely on. And without this bond, without the relationship or how society is set up, no one can exist. So the key element, which is coexistence, needs to be kept in mind, that everything that you do will not result in that material happiness that you want to achieve, but the fulfillment of duties in itself is an outcome which you start to appreciate. एंड दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू डेवलप एंड फिगर आउट. अब सपोज एक राजा है, या फिर आज के टाइम पे राजा भी छोड़ो, राजा तो पुराना सेटअप हो गया, से अ पॉलिटिकल लीडर इन टुडेज टाइम्स or an IAS officer or any person in power, they have a lot of control on the decisions that they can take for the country, for that specific region. लेकिन उसके साथ में responsibilities भी उतनी ही आती हैं. So that exercise of power is not always something that gives him that Full control freedom. or full freedom. तो तुमको ये भी देखना है कि बाकी लोग satisfied हैं या नहीं हैं. You have to go out of your way to be able to meet that. And the final outcome, which is the successful functioning of that particular state or of the country, is what drives that person. तो आप ये कह रहे हो कि जो भी पाथ आपने चुना है या जो भी एम्बिशन है आपका, जिसकी तरफ आप जा रहे हो, उसमें कई सारे ऐसे फैक्टर्स आएंगे जिसकी वजह से आप वहाँ देर से पहुँचोगे, या फिर शायद से नहीं भी पहुँच पाओगे, या फिर कुछ अदर चीज़ें आ जाएंगी, या फिर किसी टाइम के लिए आपको रोकना पड़ेगा आपकी प्रोसेस, एंड यू नीड टू पुट योर फोकस इन समथिंग एल्स. तो एक तो ये पर्सपेक्टिव होता है कि अगर आप एम्बिशियस बन रहे हो, लाइक आपने वीडियोस भी देखे होंगे, कई सारे वीडियोस ऐसे होते हैं कि जो आपको बताते हैं कि आपको अगर फुल्ली एम्बिशियस बनना है एंड यू नीड टू लाइक अचीव व्हाट यू वांट, तो आपको सब कुछ छोड़ देना है साइड की चीज़ें, एंड यू नीड टू फोकस ऑन दैट वन थिंग एवरी डे. आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, सोसाइटी जो भी है सबको छोड़ दो. तो एक पर्सपेक्टिव ये है टू अचीव व्हाट यू वांट, और एक पर्सपेक्टिव ये है जो आप बता रहे हो. सो what is your opinion about this sort of I wouldn't say it's a blind focus, but it's one way to achieve that. So yeah, what is your opinion on this? I think all perspectives are correct, right?
it is an individual choice that one makes कि आपको क्या चीज़ अचीव करनी है लाइफ में. मे बी अब जैसे स्टीव जॉब्स का एग्जांपल है, ही सेज दैट ही left everything, his family, friends, whatever that was, and he built a huge company that exists today, is creating such a wide impact. That was his choice because he set his target somewhere. It can be different for different people. People might say that no, I'm not so much interested in money. I care about the value time that I spend with the people that I love. Or for some it might be ki I need a minimum amount of luxury in my life, but I do not want it to go overboard. So I learn whatever gives or takes me to that particular level, and I'm happy with it. I'll stop there. Some people say ki I don't even want to go that path. I don't care about all these things. I care about my art. So, say a musician or an artist, they do not worry about who appreciates it, who likes it, whether it gets sold or not. They're just involved in that process of creation. Right. So I think this is a very individualistic choice, and that is very important to have actually, because if you do not know what you want to go towards, you won't be happy irrespective of whatever you do. You'll never be satisfied. You'll always be in that zone of finding that comfort or finding that state of stability, that आगे जाके मैं कहाँ रुकूं, what next. So I feel that the satisfaction level or the path that you choose will come to you when you're able to answer, this is it. There is no what next. बट जैसे ऐसा होता है ना कि एक साइड तो ये है कि मैं मेरी एम्बिशन के लिए भी आई एम वर्किंग, प्लस मैं साइड की चीज़ें भी देख रही हूँ, मैं फैमिली को भी टाइम दे रही हूँ, मैं और भी चीज़ें कर रही हूँ, और उसकी वजह से ऑब्वियसली जो मेरा फोकस होगा, जो मेरे एफर्ट्स होंगे वो डिवाइड हो जाएंगे. एंड जब आपके एफर्ट्स डिवाइड हो रहे हैं तो आपकी रिजल्ट्स भी डिवाइड होंगे, वो उतने कॉन्सेंट्रेटली आपको नहीं मिलेंगे जितना आप चाहते हो. एंड आई गेस बीइंग मीडियोकर, एक चीज़ जो आपके दिमाग में आती है ना, वो ये आती है कि मैं उम्र भर सब कुछ करता रहा, सबको संभालता रहा, सबकी डोरियाँ मेरे हाथ में थी. आई वॉज ट्राइंग टू मैनेज एवरीथिंग एंड आई नेवर रीच वेयर आई वांटेड टू. एंड देयर इज दिस अनदर पर्सपेक्टिव वेयर किसी ने सब कुछ छोड़ दिया. ही चूज वन थिंग, ही पुट ऑल हिज अटेंशन एंड एफर्ट्स टू दैट ओनली वन थिंग. एंड उसकी वजह से, जबकि हम दोनों के पास इनिशियल लेवल पे कैपेसिटीज़ एंड क्वालिटी सेम थी, वो इंसान कुछ कर पाया और मैं नहीं कर पाया. तो मुझे लगता है कि इवन दो मुझे उस प्रोसेस में तब बहुत अच्छा लगा था जब मैंने फैमिली को टाइम दिया, या मैंने सोसाइटी को टाइम दिया, या मैंने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड किया, या मैंने ये कोशिश की कि मेरे एम्बिशियस होने की वजह से किसी और को कुछ कोई और हर्ट ना हो. फिर भी उस लाइक बिकॉज ऑफ दिस चॉइसेस आई एम राइट नाउ लाइक दिस mediocre. Actually, let me ask you this. And even I'll just complete it कि maybe I'm okay with it, but मेरी जो पहुंच थी वो रुक गई. मैं वहां तक नहीं पहुंच पाया. तो मीडिया को होना शायद मेरे लिए, या जो लोग मेरे साथ थे जिनके लिए मैं काम करता था, उनके लिए वो ठीक है, बट एज अ पर्सन वेरी इंडिविजुअल मेरे लिए ये सही नहीं हुआ. और मुझे लगता है कि मोस्टली हम उस गिल्ट में या उस रॉन्ग चॉइसेस में जीते रहते हैं कि यार तब मैंने सब कुछ छोड़ दिया होता ना, तो आज मैं वो होता जो मैं अभी नहीं हूँ. तो आप इस थॉट को कैसे देखते हो? या फिर अगर मैं आज 4 चीज़ें चूज भी कर रही हूँ, या फिर मैं सबको टाइम पे दे रही हूँ, how I'm going to be satisfied with somebody's achieving something and I'm not. ठीक है. देखो, again, and whatever I'm saying is my opinion and how I look at life. So I cannot say this for anyone else. Everyone might have different opinions. But the first thing is ki question that why are you even worrying about your parents or your family? Who's asked you to do that? Feel is because I get comfort when I have people around me, when I have family around me. They are the ones who support me. They are the ones who've brought me up, and they're always there behind me. They are the reason that I do not have a single tinge of fear in my life, irrespective of where I go. I have chosen them for my comfort. It's not that they have pulled me down.
I think that is a perspective, one of the perspectives. The other is that when you say that you want to choose that ambition over everything else, go ahead, do it. Of course, achieve that. But then also look at examples that you have in front of you. Look at Steve Jobs. What did he say while he was when he was dying? So he was very unsatisfied. He said that okay, I've built everything, but what about it? I'm so ill physically. मैं डेथ बेड पे पड़ा हूँ, मेरा कोई है नहीं. I do not have a family who's here with me, who I can share my last moments with. What is it useful for? Right? So the parameters on which you gauge life, on which you value life, have to be very clear. And a lot of the times people don't realize the importance of these softer aspects that these emotions have, that people experience on a day-to-day basis, the small actions or experiences that you have, those instances that you enjoy with. It is important to cherish all those, because पैसा एक बार आ जाता है, फेम एक बार आ जाता है, it will die out very very soon. No one remembers who invented the mobile phone, no one remembers who invented the mic, no one remembers who invented the camera, right? But you're using it. अगर वो ये सोचे कि नहीं मैं नाम करके आता है, right, it will be there for few years but then it vanishes. So be careful of what you choose, and it is not wrong to choose one thing, but then you also have to accept all the other things that come along with it. That if you're choosing it, these are the things that you're letting go of. You cannot then go back and regret, because that is a conscious decision that has been taken. So no one is stopping you. It is all your choice, that these are the things that you've set up around yourself. You can completely leave all of them and focus on one, or you can have little bits of these pieces, but everyone creates that world around them in the order of expectations that they have from their life, and that is why things are there. So I think the perspective that we need to gain is not that others are pulling us, it is that we have kept them within our reach because we want it. So the idea of not taking responsibility for things and putting it on others is what creates a lot of these uh, lack of expectations बोलो, या फिर misconceptions बोलो, या फिर dissatisfaction, whatever that is. So it's completely up to us. राइट. ओके, एक ऐसा ही एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ कि जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि एक मीडियोक्रेसी का पैरामीटर ये होता है कि आप एक एवरेज लाइफ जी रहे हो इन पर्सपेक्टिव ऑफ मनी, मे बी इन पर्सपेक्टिव ऑफ फेम, इन पर्सपेक्टिव ऑफ सक्सेस और इम्पैक्ट इन सोसाइटी, इस टाइप की. बट डू यू थिंक दैट कि जिन लोगों के पास ये सब कुछ है कि उनको भी कभी लगता होगा कि दे आर मीडियोकर इन अ वे? I don't think they'll feel that they are mediocre, so to say. And again, see, mediocrity is relative to a particular parameter, right? You could be mediocre in money, you could be mediocre in fame, but you could be very happy in, or you could be in the highest tier of happiness, satisfaction, people around you, quality of life. So mediocrity is dependent on what parameter you're looking at. So if you take the example of the richest man in our country, be it Ambani, Adani's, do you think they are completely satisfied with their lives? They have a lot of money, they have everything going on, they can purchase anything that they want, but they also have a lot of other things that come along with it. First, there are expectations from them, and being able to meet that. With fame, you get a lot of criticism, you get a lot of critique, कि people will comment on you. तो बहुत बार क्या होता है ना कि हम लाइक जैसे मैंने मान लिया कि मैं एक मीडियोकर इंसान हूँ, तो मैं कुछ पैरामीटर्स पे खुद को जज करती हूँ कि मे बी इन टर्म्स ऑफ सक्सेस, मे बी मनी, मे बी फेम, और हम अगर उसमें से एक चीज़ में मीडियोकर है तो हम पूरी लाइफ खुद को ये लेबल लगा लेते हैं कि मैं तो मीडियोकर ही हूँ यार, मैं तो ऐसे ही हूँ, इससे तो आगे जाने का कोई पॉइंट ही नहीं है. बट इज दिस इज इवन राइट एटीट्यूड टू सी द टर्म ऑफ मीडियोकर या मीडियोक्रिटी? देखो, इसमें क्या होता है कि जब हम मीडियोक्रिटी डिफाइन करते हैं, दैट इज़ बेस्ड ऑन अ सिंगल पैरामीटर, एज यू मेंशन कि फेम हो गया, मनी हो गया, बट व्हाट वी आल्सो मिस आउट ऑन आर द अदर पैरामीटर्स वेयर यू एक्सेल.
or where you are in the top 1% in the world. So I don't think evaluating या फिर calling yourself a mediocre person should be done in this particular manner. It needs to have a holistic view of saying that, okay, in terms of the path that I want to choose or the type of work that I'm doing, my is it according to my choice? Are the people that I'm surrounded with, am I happy with them? Do they make me feel comforted? The place that I stay, the home that I have, the people that I'm staying with. So all these factors together should determine whether you call yourself a mediocre person or not. And I think it firstly the idea itself should be broken down altogether, because it just creates false expectations in the minds of people to say that नहीं यार मैं एक strata में हूँ, अब मुझे सोसाइटी के दूसरे strata में जाना है. ऐसा कुछ नहीं होता है. Every person, as we are talking, is unique in themselves. Everyone has their own sense of being, their own direction in life, and you cannot compare that with anyone else. It is okay to say ki, right, if you say want to move towards success in a particular domain, say you're a filmmaker, so you would obviously have your idols set, right? That this is the person that I'd follow. I really like the work of, say, Sanjay Leela Bhansali or any other director for that matter. I'll learn from him. I'll figure out that what he has done in his life or in his career and what are the right things that have happened. But I will not say that uh, he is the person, and if I do not become him, I will not be successful. It is those skills that you want to acquire because of which you look up to someone, and that is good to have. You should always have a target in your mind. Only then you'll be able to move towards it. But then comparing the entire setup with that person is, I feel, is doing injustice to yourself. कि अगर मैं उसके जैसा नहीं बन पाए इसका मतलब मैं mediocre Right. category में वो आ नहीं जाता होना हूँ. चाहिए. राइट. और आई गेस मुझे और एक चीज़ लगती है ना कि हमने बहुत रिस्ट्रिक्टेड पैरामीटर्स लगाए हैं कि जैसे हम बहुत ऊपरी चीज़ों को देख के बताते हैं कि कोई मीडियोकर है कि नहीं, कि किस टाइप का जॉब करते हो, कितने पैसे कमाते हो, कितने लोग तुम्हें जानते हैं. बट बहुत सारे ऐसे पर्सपेक्टिव है कि जो इसमें आ सकते हैं, जैसे कि हेल्थ. यू आर बीइंग हेल्दी. तुम एक ही बार भी हॉस्पिटल नहीं गए हो, तुम अपने 99 के साल में तुम सुन सकते हो, पढ़ सकते हो, यू वॉक, यू रन अराउंड. अगर इस टाइप की फिजिक आपकी है तो डेफिनेटली हेल्थ के सेक्शन में आप सुपर हो, है ना. तो जैसे मैं वही कि ट्रेडिशनली आप कितने साउंड करते हो, आपके मॉरल वैल्यूज़ कितने अच्छे हैं, ऐसे कई सारे पैरामीटर्स हैं जिनके बारे में हम नहीं सोचते बिकॉज वो एक तो आई वुड से कि वो थोड़े से सॉफ्ट भी है और उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट ऐसे नहीं दिखाई देता. और जैसे कि फेम और सक्सेस का है, क्योंकि इट्स डायरेक्टली रिलेट टू द अमाउंट ऑफ इम्पैक्ट वी पुट इन अ सोसाइटी, लार्जर लोगों में. बट ऐसे बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे पास होनी चाहिए, और ये पैरामीटर्स हमें खुद के लिए डेवलप करने चाहिए, ताकि हम जब भी किसी को या खुद को भी एक कैटेगरी में डाल दे और ये कह दे कि हाँ मैं तो मीडियोकर हूँ और मैं कभी भी लाइफ में कुछ अलग नहीं बन सकती. बिफोर इवन आई डू दिस टू माई सेल्फ, आई नीड टू सी कि वॉट आर द पैरामीटर्स वेयर आई एम गुड एंड आई हैव दैट चांस टू बी. सो आई गेस जब ये अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी ना, तो अपने आप से वो फियर ऑफ बीइंग मीडियोकर चला जाएगा. बिकॉज वी नो कि एक जगह मैं ऐसी हूँ तो दैट्स फाइन, बट देयर आर 2, 3, 10 अदर प्लेसेस वेयर आई एम सुपर, राइट. I think very rightly called out. So I just like to, give some examples in terms of how a society was defined earlier, या फिर moral conduct होता भी कैसा था. जैसे हम लोग देखते हैं कि पहले के टाइम में there was so much weightage and importance given to these morals that we had in terms of non-violence या फिर सच बोलना या चोरी नहीं करना. These used to be the standards of eliteness. कि कोई अगर मुझे पता है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, तो आई हैड दैट स्टेटस इन सोसाइटी दैट पीपल वुड रिस्पेक्ट मी, दैट कम वॉट में दिस पर्सन विल ऑलवेज टेक केयर ऑफ that I will not lie, I will not deceive anyone. And another important thing is the depth which these activities had earlier. When we say sach bolna ya satya, that did not simply mean ki just conveying what is actually happening. It had a much deep rooted meaning to say that your tone in which you speak should not make someone else feel sad. That is also a definition, or say a subcategory of truth. That someone does not get affected in a negative way from what you're saying. And suppose you're telling the truth, so to say,
but that affects someone and destroys that person's life, that is not considered as truth. So these morals which you rightly pointed out were the foundations of the society that we live in, and especially in our country where we've had such rich culture and we've operated on those principles. These are the human values that we need to focus on, which bring that level of satisfaction or content in people to say कि yes, this is अ क्वालिटी लाइफ दैट आई एम लीडिंग. तो एक्चुअली ये जितनी भी चीज़ों की हम बात करते हैं ना कि क्या मॉरल्स होने चाहिए, क्या कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, दिस इज़ व्हाट एक्चुअली व्हाट धर्म मीन्स, सो टू से. तो धर्म की भी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं. एक मतलब होता है ड्यूटी, एक मतलब होता है नेचर या स्वभाव, एज इन कि पानी का जो स्वभाव है वो शीतल रहना है, तो वो उसका धर्म है. राइट. वैसे ही जो इंसान का धर्म होता है वो खुश रहना होता है, आनंदित रहना होता है. दैट इज़ हाउ इट कम्स. एंड द code of conduct या फिर the way of life that was defined in India is essentially all of this combined to help you lead a very happy, peaceful and successful life. तो एक धर्म की definition के लिए बहुत अच्छा श्लोक आता है which says देश्यामि समीचीनम धर्मम कर्म निबर्हणम संसार दुःखतः सत्वान यो धरित्युत्तमे सुखे. इसका मतलब है कि धर्म वो है जो तुम्हें संसार के दुखों से हटा के एक उत्तम सुख में रख देता है. दैट इज़ अ वेरी प्योर, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ धर्म व्हाट वी मीन. अभी तो चलो उसको बहुत अलग अलग तरीके से पेंट किया हुआ है, बट द ट्रू डेफिनेशन इज दिस. एंड दिस इन्वॉल्व्स, अब जैसे हर जगह सुना होगा हमने कि यम नियम होते हैं, या फिर जो एक और फिलॉसफी यहाँ पे अनुव्रत होते हैं. तो वो क्या होता है? अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य एंड परिग्रह. अब जो लास्ट से शुरू करते हैं परिग्रह, व्हाट दैट मीन्स इज कि नॉट कीपिंग समथिंग मोर देन व्हाट यू नीड. तो अभी जो पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमलिज्म है, दैट इज नाउ ट्रेंडिंग सो मच दैट people have started living that way. The concept behind it is that you detach yourself from materialistic possessions, because that is something that will never be able to give you that peace, because as in when you keep increasing it, your greed keeps on increasing. So cut that to a level. And this is how people used to lead their lives earlier, in that sense of control. And what has also happened now is that people confuse control with freedom. कि अगर मैं अपने आप को, अपने मन की बात नहीं सुनूंगा तो मैं फ्री नहीं हूँ. जबकि what we are doing is कि I am making myself a slave of those objects. You have to make your man a slave of you so that you can be completely independent. And you can be free and you can be content and satisfied and at peace. सबसे बड़ी आज़ादी वही है कि आप अपनी मन की गुलामी से आज़ाद हो रहे हो. Exactly. है ना? And that is the most important thing to absorb. Difficult also to do. True, very true. राइट. सो एग्जैक्ट जैसे आपने अभी धर्म की भी कॉन्सेप्ट कही, तो सिमिलर लाइन पे ये भी एक चीज़ है, और इसीलिए आई गेस हमारी स्क्रिप्चर्स में भी ये शायद बार बार बोला जाता है कि धर्म का नेचर होता है धारण करना. तो आप उसे किस फॉर्म में, इसीलिए धर्म कभी भी लिस्ट ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट्स के साथ नहीं आता कि ये करोगे तो ऐसा बनोगे, ये करोगे तो वैसा धर्म बनोगे. इट्स मोर अबाउट कि ट्रांजिशन है, ये चलता रहेगा. कि आज की जो सोसाइटी है, आज की जो सिविलाइजेशन है, उसके अराउंड कुछ रूल्स बनेंगे. जब सोसाइटी चेंज होगी तो उसके अराउंड वो रूल्स ब्रेक होंगे, फिर नए बनेंगे. तो एक जो बांधने की आई वुड से कि कॉन्सेप्ट के, लोगों को एक साथ रखने की, वो धर्म का ट्रू फॉर्म है इन नेचर, रादर देन लाइक रिस्ट्रिक्टिंग देम टू डू व्हाट दे वांट टू डू. कि सिनर्जी कैसे रह सकती है लोगों के बीच में, पीस कैसे रह सकता है, हाउ कैन people with varying interests and varying behaviors coexist together peacefully as a whole. That is what it does. So Vasudhaiv Kutumbakam, right. How can the whole world be a single family is what we've been taught through our cultures. Yes. And we are somewhat digressing, but I think people now understand and are naturally getting back to their own roots and accepting their identities and the ways of life that we have lived through. तो हमारे कल्चर में ये एक चीज़ बताई जाती है कि अपने डिज़ायर्स को कंट्रोल करो, या फिर मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल रखो, ज़्यादा इच्छाओं के पीछे मत भागो. तो क्या इस टाइप की आइडियोलॉजी या बिहेवियर आपको लॉन्ग टर्म में सेटिस्फाई होने में, या फिर वो एक जो सेंस ऑफ काम है, पीस है, उसे अचीव करने में मदद कर सकती है? तो इसको ना हम दो पर्सपेक्टिव्स में देखते हैं.
पहला एंगल दिखता है कि हमारे पीस एंड काम एंड सेंस ऑफ रिलीफ के साइड से, वहाँ पे आई थिंक इससे बेटर कोई पर्सपेक्टिव है ही नहीं. रीज़न बीइंग कि इफ़ यू स्टार्ट लिमिटिंग योर डिज़ायर्स, obviously the expectations that you have from things get lower, and if your expectations are lower, the faster you become happy, because happiness is just meeting your expectations or desire, right? तो वहाँ से the state of content that you are at is always much much more than having a lot of desires, you know, having things about कि ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है. तो पहला तो वो वाला एस्पेक्ट हो गया. एंड आई थिंक we also have to understand कि this aspect, which is a mindset, does not reflect on material things, so to say. It is minimalism just does not mean कि मैं कम सामान रखूँ, मैं कम ये करूँ. It means attachment to those things, right? So minimalism does not mean I stop earning money. It means where I spend it. Am I spending it to fulfill my material desires, or am I putting it to good use for myself and for the society? That is what minimalism means, right? And the other part of it then comes from this exact nature that if you are limited to say limited resources in terms of what you want to purchase or where you want to spend, then you won't even earn a lot to be able to do that. But we need to understand that the world that we live in, everything is driven through money. I mean, money is a means. Obviously, it is not your final goal, but you need money to be able to do anything, be it good or bad. Money is required. तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कम अपने एम्बिशंस कम कर दो इन टर्म्स ऑफ अर्निंग, और यू से कि नहीं यार, अगर हर बंदा ही बहुत कम कमाने लगे, मिनिमलिस्टिक रहेगा, तो व्हाट हैपेंस टू द सोसाइटी, वेयर डू यू स्टैंड एज अ नेशन और स्टैंड एज अ स्टेट. तो वहाँ पे यू नीड टू इंश्योर दैट येस, यू हैव टू generate resources, and for that you have to constantly work. But once you have that, you do not just destroy it on random things, or you know, spend it somewhere where you think कि नहीं खाली मेरी इच्छा पूर्ति के लिए मैं कर रहा हूँ. Because what then happens is कि when you start doing that, you feel a sense of completeness or a sense of pleasure, and that creates a further desire of pleasure, and that just keeps on increasing, which then लीड्स टू दैट डिससेटिस्फैक्शन कर्व कि मेरी यार एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा हो गई कि अब मैं उसको अचीव ही नहीं कर पा रहा. सो आई फील कि मैं क्यों कर रहा हूँ कुछ भी. So there needs to be a good balance between where you spend, how much you earn, and how much you are attached to the things that you purchase. Right. I guess this is very right और I would say it's more like कि misconception दूर हो गया मेरा अभी जो मैं सुन रही थी उसके वजह से, कि मिनिमलिस्टिक लाइफ की डेफिनेशन इट्स मोर अबाउट कि आप सब कुछ कर रहे हो, आप पैसे कमा रहे हो, मेहनत कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन जो अटैचमेंट टू दैट मनी है वो आपकी नहीं है, फिर रिसोर्सेज से वो नहीं है. और ऑब्वियसली देन इट विल लीड कि आप आराम से ये अच्छे चीज़ों में यूज़ कर सकते हो. सोसाइटी को देते वक्त या किसी ज़रूरतमंद इंसान को देते वक्त आपको बुरा नहीं लग रहा है और आपको वो सेंस ऑफ प्लेजर एंड सेटिस्फैक्शन मिल रही है. जैसे ये एक पर्सपेक्टिव हो गया, राइट. बट देयर इज़ अनदर पर्सपेक्टिव जो हमारी जो वानप्रस्थाश्रम का होता है कि एट अ सर्टेन पॉइंट यू लीव एवरीथिंग एंड देन यू गो एज इन कि आप बहुत सिंपल लाइफ जीते हो, आप सात्विक भोजन कर रहे हो, आपने कोशिश करके बहुत सारी जो प्लेजर की आपकी क्या कहते हैं उसे फॉर्म्स है उसको दूर कर दिया है अपने आप से. तो अगर इस टाइप की लाइफस्टाइल हम जीना चाहते हैं कि काफ़ी सिंपलिस्टिक लाइफस्टाइल है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या हम आज के टाइम पे ये कर सकते हैं, और अगर कर भी सकते हैं तो क्या सोसाइटी से वैलिडेट करती है, या फिर उसके वजह से हम वो ग्रुप से अलग हो रहे हैं, आइसोलेटेड हो रहे हैं, और अलग कुछ प्रॉब्लम्स बढ़ रही है. तो इन दोनों में से क्या क्या हो सकता है, एंड व्हाट इज़ योर थॉट ऑन इट? देखो, इससे मुझे लगता है कि आजकल और ज़्यादा एक्सेप्टिंग हो गई है सोसाइटी इन जनरल, and a lot of people have actually started doing this. So this is slightly different from the state or of Vanprastha ashram as it used to be earlier. Now what people do is once they've earned enough, say they either go to a retirement home, or you know, people quit their jobs and go to say some mountains or plains, and they get a space of land, they do farming, organic farming है, वो पूरे society में contribute करते हैं. तो that is not complete asceticism कि आपने सब कुछ नहीं त्यागा है, you are still part of the society, but you've reduced
your expectations. So that is one form of a practical form of rather that vanprasthashram that you can go into right now. But the true meaning of that was to डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ मटेरियल पोजेशंस. तो जो एक संत की लाइफ होती है, एक साधु की लाइफ होती है, विच अगेन यू सी in multiple places these days. You will have so many Jain monks who are living that lifestyle devoid of all material possessions. You have other sects also where you will find these sadhus. तो उनका यही objective है that they've understood the reality of life, and that is what they've inculcated in their everyday lifestyle. But again, it is not practical for everyone. That is a very, very small percentage of people who can actually leave everything and go on to that path. But it is about the principles that okay, you cannot leave everything, but what is that level to which you can go to? So it depends on multiple factors कि आपकी आज के टाइम पे responsibilities क्या हैं. You have parents to take care of, you have say a wife, you have children. Can you ask them, ask everyone to leave and then go on this path जहाँ पे आप अकेले साधना कर रहे हो? Or it can also be कि okay, you have this setup with you, you have a set of responsibilities. How can I ensure that I am fulfilling my duties and demands that my family has from me? And within that setup, I am able to detach myself from the various things which I used to डू अर्लियर, या फिर मैं ओवरली कंज्यूम्ड रहता था जिस चीज़ों में, सपोज जिन चीज़ों की मुझे नीड भी नहीं थी. आई यूज़ टू ट्रैवल एक्सटेंसिवली, आई यूज़ टू परचेज expensive cars, I used to invest a lot in properties. But now that you and your family together have made that decision, only then you can move into that stage where you say कि, okay, this is the lifestyle that I choose for myself. I maybe get a small hut or a house or a bungalow in some remote village where you have enough resources to sustain that lifestyle, and you lead a high quality, good quality life where you get good organic food, you sleep on time, you don't have a lot of stress to earn because you've already done that for yourself, and the things that you're doing on a day-to-day basis are helping you sustain that enough lifestyle for you. Right. And like the second question which I was asking, ki, even if I am accepting that lifestyle, because of my lifestyle, will society isolate me, or will that isolation will impact me on a adverse? No, I don't think that's the case, because even now, if you go to a lot of these places, you'll see so many people who've quit their jobs. They've set up hostels in these locations, and as I was saying earlier, that people have now become more accepting of this, and especially post COVID, where people have realized that running behind money does not save your lives. Also, when you're on your deathbed, it does not matter how many billions of dollars you have in your account. It's about the quality of life that you lead. It has become more acceptable now, where people have started taking breaks from work. They give time to themselves, and not just regular people. You see a lot of celebrities who've taken break from either work, be it Virat Kohli, be it Deepika, or a lot of other folks. You'll see daily night hosts taking that break for themselves to explore what they actually are, what is their purpose in life, and just giving themselves that stability. I think the example of MS Dhoni is very good. He lives in his farmhouse when he's not playing cricket. Yeah, I think that's a wonderful example that He's involved in farming, Hmm. busy with himself to get her from the chaos of life. Of course, and this type of balance that MS Dhoni has struck for himself, I think that is something that is needed and is actually necessary for us to be able to live that sustainable life, because there'll always be chaos, right? And you cannot get away from it, but you have to find a way to get to that sense of calm within that chaos. I guess what I can figure out from this is this will not be a sudden decision. Like, you need a lot of planning to even live a simplistic life. One day you can't just wake up and say, "Ki, okay, from today I will be like this." So I guess there need to be some sort of planning, some sort of resource management you need to do before, some sort of emotional responsibilities you need to take in care of, and then only you can choose this type of life, right? So see, this again, I'll And just specifically for people who live in a uh, what I can say is like a normal people like me. We are not celebrities, like we do everyday work. So people like me, if they wanted to choose this sort of lifestyle, I guess it will not be it like having a sudden decision will not be affordable for us. see, I think it depends again on the quality
of life or the lifestyle that you define you for yourself, right? The reason that we are here, we are working in this setup, obviously it's because to earn and to be able to sustain a lifestyle or a standard that we've defined for ourselves. But suppose we lower that and we say, no, I don't want to earn that much, I want a good quality of life. It does not mean leaving everything. Sannyas and tyag does not have to be in a very literal sense always. It, as I was telling you earlier, that it is about your feeling towards those things. Now in this case, what you are letting go of is that high quality life or the luxury that you have right now. And that is also a type of tyag that you're doing to be able to afford your peace, right? So it does not have to be leaving everything, but at the same time you have to be accepting of the fact that there will be challenges that come along with it. And challenges will never go. It is only about what challenges are worth fighting for, that you have to decide for yourself. क्योंकि परेशानियां हर जगह होंगी, स्ट्रेस हर जगह होगा, but if you know that the outcome of this stress, or not even stress, the outcome of me putting in so much effort to able to achieve this is worth it, because the goal or the destination that I've set for myself, I know this is where I'll find the maximum peace for me. This is where then you take that decision. Your objective is not to help people, your objective is not to People see that I'm helping. हाँ, तुम्हारा वो पर्सपेक्टिव है, एंड यू वुड नॉट केयर अ सिंगल बिट इफ समवन कम्स एंड सेज कि भाई तुम ऐसी दिख रही हो, तुम वैसी दिख रही हो, या तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, बिकॉज दैट इज़ नॉट द एम ऑफ योर लाइफ. अब आके तुमसे कोई कह दे कि तुम पायलट नहीं हो मेघना, तुम्हें फ़र्क पड़ेगा? तो वैसे ही उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि अगर कोई आके कह दे कि तुम इतनी अच्छी साड़ी क्यों नहीं पहनती हो, मैं हूँ ही नहीं वो. और आई गेस सर्टेन पॉइंट के बाद ये चीजें मैटर ही नहीं करेंगी लोगों के लिए भी, हाँ. व्हेन दे सी द वर्क यू डू एंड व्हेन दे सी कि तुम एक्चुअली कितने प्रेजेंट हो तुम्हारे इस बिहेवियर में. राइट. तो वही इट इज़ अबाउट नोइंग कि तुम जो चीज़ कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, है ना, एंड बीइंग कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन. Let anyone come and say anything to you, because they do not know you, they do not know your life. Their job is to come and say and comment and leave. It is you who gets affected, and you have to be so strong in your thought and be so clear in your vision कि who you are, what you are doing. Right. और मुझे लगता है कि अगर एक टाइप की बिहेवियर या लाइफस्टाइल अगर हमने चूज की है अपने लिए, तो हमें ये भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि इसी लाइफस्टाइल के अराउंड लोग हमसे जुड़ते जाएंगे, या फिर जिनको ये नहीं पसंद आता वो नहीं जुड़ेंगे. तो यू शुडंट फील बैड अबाउट इट कि जो एज इट इज एक्सेप्ट करते वो अपने हैं, या जो नहीं करते. राइट. और तुम अट्रैक्ट भी ऐसे लोगों को ही करोगे हु अलाइन विद योर विजन, who are comfortable in that lifestyle. अब आज सपोज मैं बहुत ज़्यादा पार्टीज़ करता हूँ, तो आई विल ऑब्वियसली मीट दोज पीपल हु पार्टी अ लॉट, एंड एज सून एज आई से कि मैं पायलट बनता हूँ, तो आई विल सराउंड माई सेल्फ विद पीपल हु आर इन दैट जोन एंड विद दोज इंटरेस्ट. तो जो हम कहते हैं ना, यू ऑलवेज अट्रैक्ट पीपल लाइक यू. हाँ, तो वही होगा तुम्हारे साथ. तो यू जस्ट हैव टू बी ट्रू टू योर सेल्फ, क्योंकि अगर तुम वो नहीं हो देन यू विल अट्रैक्ट द रॉन्ग पीपल. और अगर लाइक इनिशियली तो वो लाइक कोई भी नई चीज़ करोगे तो इनिशियली इट विल बी डिफिकल्ट, बट अगर आप एक बार ये सेट कर लेते हो कि ठीक है कि मैं इस तरह की एक लाइफस्टाइल जीने वाली हूँ, इसके कुछ एडवांटेजेस भी हो सकते हैं, कुछ इनिशियली डिसएडवांटेज हो सकते हैं मे बी, बट लेटर दे विल डिसॉल्व, देन आई गेस इट विल नॉट बी अ प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर. Sacrifices are always there in life. You just have to choose your sacrifices. तो हमारे सारे कॉन्वर्सेशन में हमने बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स देखे जो हमारे हैप्पीनेस को इम्पैक्ट करते हैं. हमने ये भी समझा कि शायद ऐसी स्टेज लाने में लाइफ में कि जहाँ हम परमानेंटली हैप्पी है, उसके लिए बहुत टाइम शायद लग सकता है. लेकिन आज मैं जिस किसी भी कंडीशन में हूँ, अगर वहाँ से मुझे 2 स्टेप्स आगे बढ़ना है इन टर्म्स ऑफ माई हैप्पीनेस, तो मुझे क्या करना चाहिए? आई थिंक सबसे पहली चीज़ ये है कि जो भी एक्टिविटी आप पिकअप कर रहे हो, जो भी टारगेट सेट कर रहे हो, जस्ट नो द रीज़न बिहाइंड दैट कि वाई हैव यू सेट योर सेल्फ ऑन दिस पाथ, एंड जस्ट बी वेरी क्लियर अबाउट इट. क्योंकि अगर तुम्हारा गोल क्लियर होगा एंड उसका रीज़न क्लियर होगा, देन यू विल ऑलवेज बी एबल टू रियलाइन योर सेल्फ वेन एवर यू मूविंग, कितनी भी डिफ़िकल्टीज़ आएँ. सेकेंड इज़, जब डिफ़िकल्टीज़ आएँ तो क्या करना चाहिए. मेरे लिए जो हेल्प किया है वो एक तो ये चीज़ है कि try to control the emotions in that time, which is very difficult to do, and it took a lot of practice to be able to reach
or rather move a little further in that process, कि जब भी कुछ आ रहा है just think about कि there are always good times and there are always bad times that come in life and you cannot run away from these. So whenever you are facing those difficulties, just be patient, be calm, keep working towards it, and have that thought कि this will pass, because that is the nature of law, that is the rule of law, कि when you have sunrise you'll always have a sunset, and when you have a sunset you'll always have a sunrise, and it follows everywhere. So just be aware of that thing. एक और चीज़ है कि enjoy what you do, or rather find joy in that process of doing things. अगर वो नहीं भी है, ट्राई टू मेक इट फन, ट्राई टू मेक इट इंटरेस्टिंग. सोचो कि मैं इसमें क्या ऐसा एंगल डालूं कि यार मुझे पता है कि अगर मैं रोज़ इससे परेशान हो रहा हूँ, बट नो, आई विल फाइंड वन थिंग दैट विल मेक मी डू दैट एंड आई विल एन्जॉय दैट प्रोसेस. एंड फॉरगेट अबाउट द गोल, स्टे डिटैच्ड फ्रॉम इट. वंस यू सेट द गोल, फिर उसको भूल जाओ, बट बी accurate in terms of defining it. एक बार हो गया, then just put your entire thought in the process and start loving it. That is what will help you get over any problems that you face in life. And another small thing which is difficult to do is control your reactions, control your responses. हर चीज़ को देख के बहुत जल्दी एक्साइट भी मत हो जाओ, हर चीज़ को देख के बहुत जल्दी दुखी भी मत हो जाओ. देखो पहले, एनालाइज करो, समझो कि इज़ इट वर्थ गिविंग योर टाइम, इज़ इट रेलेवेंट टू यू. इफ़ येस, ओके, क्या है क्या नहीं है, फिर उसको एनालाइज करो. अपना रिस्पॉन्स में कंट्रोल, एक ठहराव, एक स्टेबिलिटी लाओ. आई थिंक बहुत ज़्यादा तो मैं भी नहीं जानता, बिकॉज आई एम ऑल्सो डिस्कवरिंग लाइफ, बट दीज आर थिंग्स दैट हैव हेल्प मी पर्सनली get over difficult situations and move forward in life. सो टुडे वी हैड वेरी इंसाइटफुल डिस्कशन और हमने कई सारे लाइफ पर्सपेक्टिव्स के बारे में बात की. एज अ पावन पॉडकास्ट हम उन क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे जिनके आंसर्स लोग ढूंढना चाहते हैं. तो हमारे आने वाले पॉडकास्ट के टॉपिक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है. तो तब तक स्टे ट्यून्ड विद अस एंड वेट फॉर न्यू एपिसोड्स.